लड़कियां मीन्स यू जस्ट डू द एजुकेशन लिटिल बिट, वो सब करो, उसके बाद शादी करके चले जाओ. बट एक माइंड पे था मुझे खेलना है एंड आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट तुमसे कम नहीं हूं मैं. Hi, I'm Jhulan Goswami and I'm going to talk to you about my long game. Behind me are some stories और हर एक स्टोरीज मुझे कुछ सिखा के गए और मैं ये स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. लेट्स गो. ओह, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, अगर मेरे बॉल पे कोई अगर सिक्स मारते थे या बाउंड्रीज जाते थे तो वो लोग बहुत टीच करते थे, बिकॉज अरे लड़कियों को लेके आए तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, हम तो जीत जाएंगे. एंड उससे मुझे बहुत गुस्सा आता था. मेरे को लगता है यार मेरे को तुम लोगों की तरह तेज बॉल डालना है. दे यूज्ड टू से लड़कियां मीन्स यू जस्ट डू द एजुकेशन लिटिल बिट, वो सब करो, उसके बाद शादी करके चले जाओ. बट एक माइंड पे था मुझे खेलना है. आई वांट टू बिकम ए गुड क्रिकेटर, आई वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल क्रिकेटर. तुमसे कम नहीं हूं मैं, तुम्हारे साथ मैं लड़ाई करके जीत सकती हूँ. एंड माई टेक अवे इज, आप अगर अपने इनर इंस्टिंक्ट को अगर बिलीव करते हो तो डेफिनेटली ऑनेस्टी या डेडिकेशन के साथ आप उस जगह पहुंच सकते हो. ओह, ब्लैंकेट, इसके साथ बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं. हम लोग जब अंडर 19 खेलने जाते थे, वहाँ पे जो एकोमोडेशन था इट वाज एब्सोल्युटली हॉरिबल. वहाँ पे ब्लैंकेट नहीं था विंटर में एंड वो बहुत ठंडे. एंड अनरिजर्व कंपार्टमेंट पे गए थे, पानी का दिक्कत होते थे. वहाँ पे मतलब जमीन पे सोना पड़ता था. घर वाले बहुत डांटते थे, जो ऐसे फैसिलिटीज़ में आप कैसे खेलने जा सकते हो. बट हाँ, एक चीज़ है, हम लोगों के पास पैशन था, हम लोगों के पास जुनून था. तो एक टफ सिचुएशन से मेरा टेक अवे है, आपका जो काम है उसके ऊपर फोकस करो एंड बाकी चीज़ ठीक होता जाएंगे. दैट इज़ हाउ आज की डेट पे वुमेन्स क्रिकेट इस लेवल पे आए हैं. ओके, Mr. Shapun Sadhu sir, till today he is my coach. One day I have gone to training sessions and I have told him, sir, for me it's difficult to continue. He said, why? What is the problem? I said, first problem, coming from Chakda to Kolkata, 2.5 hours train journey. And cricket is pretty expensive game, and coming from middle class family, it was quite extra burden for my family. So he said that give me 2 years, I will take care of everything of her. एक ही शर्त थे, वो प्रैक्टिस नहीं मिस करेगी उस 2 साल में. जिंदगी में गुरु होना चाहिए एंड गुरु का रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता. एंड वट एवर ही टॉट यू, यू मस्ट बिलीव ऑन दैट. Initial days when I'm young, so I used to eat, I used to run, I used to do everything. But when you're getting older, and you can see that your fitness graph is going down. I spoke to our trainer. First thing he said, सब खाना बंद, only certain things you have to eat. उसके वजह से, because of dieting, fitness level has gone up, my injury thing has gone down, and I was more energetic, more fresh, long lasting in my career. इतना लंबा नहीं होता था, नहीं तो otherwise बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे. Oh, our captain, मिथाली राज. एक स्टोरी बताती हूँ. 2002 में हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे टन में. And she was batting on 100 or run something. I just came down as number 7 batter. So she was very tired. And those days she used to use very heavy bat. And then I told her, I said, just stay there. I am with you. I'll give you full support. And after certain time के बाद फिर से partnership build होने लगे. And she scored 150 plus that time. And then she said, Jhulan, I can't. My arms is becoming numb. तो मैंने उसको बोला, I said, Mithu, look at that flag. We have to do it for the country. And after that, वो partnership हम लोगों का 7th wicket is a world record partnership बने. She scored 200 plus runs. And from this, my takeaway is, आप अपना जॉब को कितना पैशन के साथ देखते हो वो भी मोटिवेट कर सकते हैं. इस मोटिवेशन के लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू हैव क्लियर माइंड व्हाट यू वांट टू डू. व्हाट नेक्स्ट? लेट मी सी. Oh, most important thing as a cricketer,
टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, बट एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट करना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत बहुत बड़ा ड्रीम है. डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आएंगे खेलने के लिए, आपको सबके साथ एडजस्ट करके खेलना है. You have to do lot of communication as a leader. That is the biggest important thing. If you don't know your teammates, उनका emotional feeling क्या है, उनका mental feeling क्या है, well, technically if they feel any difference, yeah, they are feeling nervous. So all those things you have to know as a leader. What you are doesn't matter, but how you give that comfort to your teammates, that is the important thing. As a leader, you have to lead from the front, no matter what's going to be your result. I always said that in a team meeting and everywhere, that team jeete, your credit, and if we lost, I'll take the blame. Okay, that was 2017 World Cup final match at Lords. We lost that match. See, winning and losing is a part of the life, but important thing is हम लोग जब जीतते हैं हम अच्छा memories को लेके जाते हैं, but जब we lost, we start blaming each other. Winning and losing is a part of the life, but how you come back, that is the most important thing in the life. Okay, this is pair of shoes, छोटे बच्ची के हैं. One girl was there in our academy. She's come from very poor family, and somebody told me that she doesn't have cricket gears, proper gears, and she was using from, you know, किसी का बैट लेके, किसी का बॉल लेके. आई सेड उसको मेरे गाड़ी में बिठाओ, आई विल टेक हर. तो आई सम बाजार में एक दुकान है, वहाँ जाके मैंने उनको बोला जो जो क्रिकेट इक्विपमेंट चाहिए आप बेस्ट क्वालिटी का इनको दे दो. एंड शी स्टार्ट क्राइंग. आई सेड व्हाई आर यू क्राइंग? बिकॉज शी सेड दीदी माय डैड इज नॉट देयर, माय मॉम के लिए पॉसिबल ही नहीं था ये सब गिफ्ट मतलब खरीद के देना, या आपके वजह से मैं बंगाल टीम में अपना खुद का क्रिकेटिंग गियर्स लेके जाऊँगी. I feel so blessed, and till today she is one of the most important member of the senior Bengal women's team. Game have given me a lot, amount of respect, amount of joy, amount of everything. So it's my time to give it back to the game. Okay, this is Dr. J. Education and me in a different line. I am into sports, who started playing cricket not to study much. From there onwards, you are getting doctorate from the university. It was something different honor, and I'm very much fortunate and very much happy to receive that word. And because of that, nowadays, मेरे टीम में सारे लड़कियाँ start calling me Dr. J. जब जिंदगी में आप किसी चीज़ से दूर भागना चाहते हो, somehow down the line उसी चीज़ के सामने आके आप खड़े हो जाते हो. Let's see. Okay, this is interesting. Obviously, as a fast bowler, you will go through a lot of injuries. Every day morning before I go to the match, I have to do a lot of taping, elbow taping, ankles taping, rhomboid muscle taping. It's a lot of things. It took 1 hour. When you are doing so well, suddenly एक freak injuries आपका मोमेंटम ब्रेक कर देता है. उससे आपको क्या होता है, यू विल स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस व्हेन यू सॉ योर टीममेट्स परफॉर्मिंग, एंड आप घर पे बैठ के या क्लिनिक पे जाके रिहैब कर रहे हो. इट्स द टफेस्ट थिंग. दिस इज नॉट अबाउट मी. ऑल द एथलीट इन द वर्ल्ड, either your hamstring is not well, yeah, your cuff muscle is not well, but you start preparing yourself, and mentally आप बहुत ज़्यादा strong होते हो, and जब mentally आप strong होते हो आपको performance में वो दिखता है. This is a beauty about the sportsman spirit, that whatever circumstances you have to go there and perform. उसके साथ कोई compromise नहीं होगा. That is the beauty, and that we have learned from cricket field, sports field.